Assalamu alaikum warahmatullah. Yesterday I was given the introduction of surface chemistry, continuation of that. Outermost thickness about the 100 nanometer. Consider this is the substance. Uppermost layer is about 100 nanometer thickness, is called as the surface area. The branch of the physical chemistry which deals with the phenomena, the processes which are taking place on the surface area is studied in the surface chemistry. So in the surface chemistry, first basic definition we have to learn. Which are those definitions? What is the absorption and what is the adsorption? You know that yesterday I was explained that absorption and adsorption. Absorption is the bulk phenomena, absorption of water in sponge, absorption of ink in the chalk. That is the absorption means. That is the which process, bulk process. Ink molecules totally occupied in the chalk when chalk is dipped in the ink. Now then, what is the adsorption? Adsorption is the surface phenomena, concentration of the one substance only on the surface of the other, not into the substance. Substance के अंदर नहीं जा रहा, खाली surface पे आके जम जा रहा, तो उसको बोलते हैं adsorption बोल के बुलाते हैं. एक चाय देखो इधर भाई. Concentration of the one substance only on the surface of the other, that is called as adsorption. Adsorption. This is the definition, and adsorption is the surface phenomena. इस चैप्टर में अपन adsorption के बारे में पढ़ना है. तो यहाँ पे एक definition है. What is the adsorption? Means concentration of the one substance only on the surface of the other substance is called as adsorption. Now, in the adsorption process, there are two things are participated. Which are those? First one, on whose surface area adsorption is takes place, that is called as, इसके ऊपर adsorption हो रहा, उसको क्या बोल के बुलाते? Adsorbent बोल के बुलाते, adsorbent. और जो molecules आगे concentrate हो रहे हैं, that is called as, वो molecules को, वो gas whatever it may be, वो substance को क्या बोल के बुलाते? बोले तो adsorbate बोल के बुलाते. adsorbate और adsorbent ये दो definitions में बोला. Adsorbent मतलब on whose surface area adsorption is takes place, that is called as adsorbent. The molecules, the substance whose molecules are concentrated on the another substance, that substance is called as adsorbate. For example, H2 gas is concentrated on the nickel surface, nickel के ऊपर H2 gas adsorb हो रही, तो what is the adsorbent? Nickel metal is the adsorbent and H2 gas is the adsorbate. Now see that based on the affinity interaction between the adsorbate and adsorbent, ये adsorbate और adsorbent दोनों के बीच में interactions कैसे है, forces कौन से acting कर रहे हैं. तो based on that, process of adsorption is classified into two types. Adsorption is of two types. First type is the physical adsorption. Physical adsorption. And second one is the chemical adsorption. Based on what? Based on the interaction present between the adsorbate and adsorbent. The process of adsorption is classified into two types, physical adsorption and chemical adsorption. Now you see what is the physical adsorption. पेज ऐड करना है, पेज ऐड करना है.
पेज को कैसे ऐड करते? पेज को ऐड करना है। पेज यहाँ पे क्लिक करे तो हो जाता ना। Next one, this is an important question from this fourth chapter. Write the differences between physical and chemical adsorption. Write the differences. Write the differences between physical and chemical adsorption. Okay, we'll see one by one. First I am writing the physical adsorption in the left side. Physical adsorption. On the right side, chemical adsorption I am taking. Chemical adsorption. Okay. In the physical adsorption, first thing you have to write between the adsorbate and adsorbent. Between the adsorbate and adsorbent, physical forces are acting. In this physical adsorption, you know that what is the adsorbate and adsorbent. This is the adsorbate and it is the adsorbate, that is nickel and the hydrogen. Hydrogen is the adsorbate and nickel is the adsorbent. Between these two, if physical forces are acting, the type of the adsorption is called as the physical adsorption. So in this first point, you have to write this point. What is that point? In this adsorption, in this process, between the adsorbate and adsorbent, between the adsorbate and adsorbent, physical forces are acting. Physical forces are acting. This is the first point. In the differences, first point you have to write which are the attraction present between the adsorbate and adsorbent. In this itself is the chemical adsorption now. Therefore, you have to write between the adsorbate and adsorbent, between the adsorbate and adsorbent, chemical forces are present. Chemical forces are acting. So this is the first important definition. And the second difference is what is the process actually reversible है irreversible है, इसके बारे में लिखना. फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब दोनों के बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस एक्टिंग करते रहते, मतलब यहाँ से फिर निकल गया तो फिर आके एड्सॉर्प्शन होता, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल. और केमिकल एड्सॉर्प्शन एक बार हो गया तो फिर एड्सॉर्बेंट अलग नहीं होते, थोड़ा मुश्किल होती, सो उसको क्या बोलते बोले तो इरिवर्सिबल बोल के बुलाते. फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज व्हाट रिवर्सिबल. इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. एक बार हो गया. It is irreversible process and it is the reversible one and that is the irreversible one. पूरा एक अपोजिट रहता ना. नेक्स्ट इन दिस इट इज द नॉन स्पेसिफिक, मतलब कहीं भी होता भाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन. केमिकल एड्सॉर्प्शन वैसा नहीं, निकल पे हाइड्रोजन गैस आती, नेक्स्ट चारकोल के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एड्सॉर्ब होती, तो फलाने चीज पे फलानी चीज एड्सॉर्ब होती, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोलते हैं. अब किसी पे भी हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक. इट इज नॉन स्पेसिफिक and chemical adsorption is specific one. This is about the another difference. Now next one energy change during the adsorption process. Energy is released. Energy change during the process is less. कम energy release हो रही. Energy change during the process is less. Energy change during the process is more. Energy change ज़्यादा होती. Now next इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस. एक्टिवेशन एनर्जी
एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी इज मोर, ऐसा लिख लेना है। और एक इसके अंदर पहले वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिवर्सेबल है, ये नॉन स्पेसिफिक है। नेक्स्ट एनर्जी चेंज इज लेस 20 to 40 किलो जॉल्स, यहाँ पे एनर्जी चेंज इज मोर 40 to 400 किलो जॉल्स, इतनी एनर्जी एक्सचेंज होती भाई। देन फिर उसके बाद में अनदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, क्या है मालूम है वो, व्हाट इज दैट? yes. Now this is the unilayer, multi-layer process है ये, multi-layer process है, it is the multi-layer process and chemical adsorption is the unilayer, single layer में होता। एड्सॉर्बेट के ऊपर एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्बेट आ गया, बस खत्म, एक ही लेयर में फॉर्म हो गया। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर प्रोसेस है। नेक्स्ट, दिस इज इंक्रीजेस विद द प्रेशर, it is this process is increases by increasing the pressure बढ़ा रहे तो physical adsorption increase होता, chemical adsorption it does not, has no effect of the pressure का effect यहाँ नहीं है भाई यहाँ पे। now next, it decreases with temperature, decreases with increase in temperature, increase in the temperature, यहाँ पे it is increases with increase in the temperature, increases with the temperature, and finally अभी ज़्यादा बढ़ा दिए तो decrease होता, मगर इतना लिखे तो बस increases with the temperature. These are the important differences between the physical and chemical adsorption, and it is the important expected question. Important expected question है, write the differences between physical and chemical adsorption. 13th और 14th क्वेश्चन ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री से आता, तो उसमें ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसके अंदर आपको क्या बोलना है भाई? फर्स्ट डिफरेंस इज between the adsorbate and adsorbent physical forces are present. Chemical adsorption में between the adsorbate and adsorbent chemical forces are present. Next one, what is that? This is the physical adsorption is the reversible one, chemical adsorption is the irreversible one. फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर एनर्जी चेंज कम रहता, केमिकल एड्सॉर्प्शन में एनर्जी चेंज ज्यादा होता। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफिक। Physical adsorption is the multi-layer process, chemical adsorption is the unilayer process. Physical adsorption is increases with the pressure, chemical adsorption has no effect of pressure. Now physical adsorption decreases with increase in temperature, chemical adsorption increases with increase in temperature, and by increasing अभी ज़्यादा बढ़ा दिए आप तो केमिकल एड्सॉर्प्शन भी डिक्रीज होता, तो वट एवर इट मे बी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखना है आपको। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, ये चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ देन आफ्टर दैट, व्हाट आर द कोलॉइडल सॉल्यूशंस? कोलॉइडल सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस, व्हाट आर द कोलॉइडल सॉल्यूशंस? बिफोर गोइंग टू दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं। homogeneous mixture of the two are components are called as solutions. दो या तीन कंपोनेंट्स के होमोजीनस मिक्सचर को क्या बोल के बुला रहे हैं अपन? सॉल्यूशंस बोल के बुला रहे। तो देखिए बेटा, इसके अंदर जो कम क्वांटिटी में रहता उसको क्या बोल के बुलाते? सोल्यूट बोल के बुलाते। जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको क्या बोल के बुला रहे हैं अपन? सॉल्वेंट बोल के बुला रहे हैं। बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट की पार्टिकल साइज के बेसिस पे सॉल्यूशंस को तीनों टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। बेस्ड ऑन व्हाट? पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट, सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। इफ द पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट इज वेरी लेस देन 1 मिलीमाइक्रोन, दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अंदर पार्टिकल साइज बिल्कुल कम है, अपने को नहीं दिख रहे हैं वो, ओके, ऑर्डिनरी मेथड से सेपरेट नहीं हो रहे हो।
We cannot separate solute from the solvent easily. Those type of the solutions, those are homogeneously mixed. If the particle size of the solute is very less, that is less than 1 millimicron, 1 millimicron से भी कम है, तो वैसे टाइप ऑफ कोलाइडल, वैसे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को क्या बोल के बुलाते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस बोल के बुलाते हैं. So second type, if the particle size is in between 1 millimicron to 1 micron, 1 millimicron से 1 micron के बीच में है, पार्टिकल साइज यानी कि थोड़ा ज़्यादा है, जैसा आटा है, कम है, इसको मैं पानी में डिसॉल्व कर लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता. तो इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स अपने को क्लियर से दिखते, सोल्यूट पार्टिकल्स क्लियर से दिखते. तो पार्टिकल साइज अगर थोड़ा ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बोल के बुलाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन. Okay, if the size of the solute particle is in between 1 millimicron to 1 micron, that type of the solutions are called as colloidal solution. If the size of the solute is less than 1 millimicron, those type of the solutions are called as true solutions. If the particle size is more than the 1 micron, those are called as suspensions बोल के बुलाते हैं. These are called as the suspensions. 1 माइक्रोन से भी ज्यादा रहता पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट. तो अपने को क्या पढ़ना है? कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में अपने सिलेबस में है. कोलाइडल सॉल्यूशंस है. कोलाइडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. Solutions in which particle size of the solute is in between 1 millimicron to 1 micron, those type of the solutions are called as colloidal solutions. ठीक है, colloidal solution is the heterogeneous system है भाई. ये अपने को पार्टिकल्स थोड़ा इधर उधर फिरते हुए अलग अलग दिखते हुए रहते. तो ये कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में रहते हैं, उनको क्या बोल के बुलाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट को क्या बोल के बुलाते हैं मालूम है आपको? डिस्पर्शन, डिस्पर्शन फेज बोल के बुलाते हैं. जो ज्यादा क्वांटिटी में, जैसा पानी में मैं स्टार्च डाल लिया, आटे को डाल लिया, थोड़े क्वांटिटी में है आटा, तो उसको डिस्पर्शन फेज बोलते. और पानी ज्यादा क्वांटिटी में है, उसको क्या बोलते बोले तो डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मीडिया बोल के बुलाते हैं. सो डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडिया, ये दो टर्म्स है कोलाइडल सॉल्यूशन में. यानी कि सोल्यूट को डिस्पर्शन फेज बोल सकते हैं आप, सॉल्वेंट को डिस्पर्शन मीडिया बोल के बुला ले सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो इन द केस ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन ये दो डेफिनेशन है, डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडिया. तो आपको एग्जाम्पल फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन पूछता, तो एग्जाम्पल्स फॉर द कोलाइडल सॉल्यूशन, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई मैं. ये स्टार्च सॉल्यूशन है. स्टार्च सॉल्यूशन में डिस्पर्शन फेज क्या रहता, डिस्पर्शन मीडिया क्या रहता? डीपी बोले तो डिस्पर्शन फेज. व्हाट इज द डिस्पर्शन फेज? मतलब कम क्वांटिटी में कौन है? स्टार्च पार्टिकल. स्टार्च पार्टिकल इज द डिस्पर्शन फेज. एंड व्हाट इज द डिस्पर्शन मीडिया? Dispersion media in this starch solution is water. Water is the dispersion media. This is about the starch colloidal solution. Next, what is blood? And blood is the colloidal solution है. colloidal solution के अंदर इसमें dispersion phase क्या है? What is the dispersion phase and dispersion media in the blood? Dispersion phase, dispersion phase is the albuminide substance. Blood cells है ये. Okay, albuminide, albuminide substance, that is the protein material, that is the dispersion phase. And what is the dispersion media in this? Plasma, water is the dispersion media. Simply आप water बोल के लिख सकते. albuminide substance, proteins, that is the dispersion phase in the blood. And what is the dispersion media? Water is the dispersion media in this blood. So this is the another example for the colloidal solution. और एक एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ भाई मैं. व्हाट इज स्मोक अगर पूछ लिया, स्मोक इज ऑल्सो वन कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप. स्मोक के अंदर कार्बन पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स है, उसको क्या बोल के बुलाते हैं? डिस्पर्शन फेज. कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स, दैट इज द डिस्पर्शन फेज. एंड व्हाट इज द डिस्पर्शन मीडिया? स्मोक कहाँ रहता भाई? हवा में. तो डिस्पर्शन मीडिया इज एयर. This is about the smoke. Next cloud है next वाला. It is also colloidal solution. Cloud के अंदर what is the dispersion phase?
Dispersion phase in the cloud is what? Water droplets hai. Water droplets. This is the dispersion phase in the cloud. Dispersion media, DM. Dispersion media is air. If the air is there in the colloidal solution, those are called as aerosols बोल के बुलाते. अगर water है तो उनको क्या बोल के बुलाते? बोले तो hydrosols बोल के बुलाते. So this is the another example for this colloidal solution. चल और एक example बोल के ये examples रोक दे रहा हूँ मैं. Gold solution है. Gold solution में gold particles. This is the dispersion phase and water is the dispersion media. Gold particles and water, this is the dispersion media. Now then, based on the affinity between this dispersion phase and dispersion media, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडिया के बीच में जो इंटरैक्शंस है, कैसे है भाई वो इंटरैक्शंस? दोनों के बीच में अट्रैक्शंस है नहीं है, रिपल्शंस है. इसके बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशंस दोनों टाइप्स के है. फर्स्ट वन इसमें लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस. सेकंड वाला लियोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस. Based on the affinity present between the dispersion phase and dispersion media, colloidal solutions are classified into two types. First one is the lyophilic colloidal solution, second one is the lyophobic colloidal solutions. इसमें एक दो तीन differences पढ़ लेंगे. लियोफिलिक के अंदर फर्स्ट वाला लियोफिलिक affinity between the dispersion phase and dispersion media. Affinity between that means attraction between the dispersion phase and dispersion media is good. दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी एफिनिटी है. तो वैसे कोलाइडल सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं मालूम है? लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं. If the affinity is not existed, attractions are not there, if the repulsion is between the dispersion phase and dispersion media, that is affinity is not existed, affinity is not there, if they are repulsive, those type of the colloidal solutions are called as lyophobic colloidal solution. You know that second difference is this lyophilic colloidal solutions are stable है, and lyophobic colloidal solutions are unstable. These are unstable. Next one, third one, these are reversible. सोल्यूट से सॉल्वेंट अपन निकाल ले सकते हैं, मतलब सॉल्वेंट से डिस्पर्शन मीडिया से डिस्पर्शन फेज को एवापोरेट करके निकाल ले सकते. सो उसको बोलते हैं यहाँ पे रिवर्सिबल, इजी टू प्रिपेयर. दीज आर इरिवर्सिबल, फिर दोनों को अलग अलग करना, फिर प्रिपेयर करना मुश्किल होता. सो इसमें टिंडाल इफेक्ट ब्राउनियन मूवमेंट्स इसमें कम रहते, टिंडाल इफेक्ट ब्राउनियन मूवमेंट्स इसमें ज्यादा रहते. This is about the differences between lyophilic and lyophobic. फिर एक बार repeat कर रहा हूँ मैं. If the affinity between dispersion phase and dispersion media is good, attractive, that type of the colloidal solutions are called as the lyophilic colloidal solutions. If the affinity is not existed, that is bad, repulsive, that type of the colloidal solutions are called as the lyophobic colloidal solution. Example for the lyophilic is the starch solution, blood is the example. For the lyophobic, what is the example? Gold solution is example, and cloud is also example for that. Smoke is also example for the lyophobic colloidal solution. Lyophilic colloidal solutions are stable and lyophobic are unstable. These are easy to prepare and reversible. These are not easy to prepare and these are irreversible. So in this टिंडाल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट्स कम रहते हैं और लियोफोबिक में टिंडाल इफेक्ट ब्राउनियन मूवमेंट्स ज्यादा रहते हैं. So this is about the differences between the lyophilic and lyophobic colloidal solutions. Now you see that applications of colloidal solutions. थोड़ा applications के बारे में. Applications है, properties है इनके.
फिर उसके बाद में व्हाट इज द कैटालाइसिस, इसके बारे में समझा रहा हूं मैं। एप्लीकेशंस ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशंस लास्ट ईयर पूछा था। एप्लीकेशंस के अंदर फर्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन? इट इज यूजफुल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में ये एप्लीकेबल है, बिकॉज ड्यू टू द कोलॉइडल नेचर ऑफ द इम्प्यूरिटीज। और वाटर ले लिए भाई, इसके अंदर अगर इम्प्यूरिटीज हैं, उनको कोलॉइडल नेचर रहता, इसको मैं आलम वगैरह मिला दिया तो क्या होता, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है आलम से मिलते, वो अगलेट होके नीचे बैठ जाते हो। तो इस तरीके से वाटर को प्यूरिफाई करते। इट इज यूजफुल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। सेकेंड वन, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन को कोलॉइडल नेचर की वजह से प्रिपेयर करते हैं। और ड्रग का जो एक्शन है और मेडिसिन जो काम कर रहे हैं, कोलॉइडल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से ये मेडिसिन प्रिपेयर होते हैं और मेडिसिन काम करते। नेक्स्ट इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, एयर के प्यूरिफिकेशन में भी काम आता। नेक्स्ट इन द टैनिंग ऑफ लेदर्स, टैनिंग ऑफ द लेदर। जनरली स्किन है भाई, ये लेदर है, लेदर को क्या करते हैं, कौन से भी मटेरियल से मिला देते हैं, टैनिंग एजेंट से मिला देते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्किन है ना, ये हार्ड हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज द टैनिंग ऑफ लेदर्स बोल के बुलाते हैं। स्किन को हार्ड बनाने को टैनिंग ऑफ लेदर्स बोलते हैं। सो ये सब आर्टिफिशियल रेन्स प्रोड्यूस करने के वास्ते भी ये कोलॉइडल मतलब ये अप्लीकेबल है। सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मेडिसिन के प्रिपरेशन में, एयर को प्यूरिफाई करने, टैनिंग ऑफ लेदर, आर्टिफिशियल रेन्स को प्रोड्यूस करने में ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस एप्लीकेबल है। नाउ देन उसके बाद में व्हाट इज कैटालाइसिस? कैटालाइसिस किसको बोलते हैं? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। व्हाट इज कैटालाइसिस? Catalysis, write its types, write its types. What is catalysis? With the help of the catalyst we are increasing the velocity of the reaction, यानी कि आधे घंटे में होते सो रिएक्शन, एक सब्सटेंस को मिला के, मेटल को मिला के अपन रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। that process increasing the velocity of the reaction by using the catalyst is called as catalysis. Catalysis is nothing but the process in which catalyst is used. Catalyst is used to increase the velocity or rate of the reaction. Rate means what? Velocity, speed of the reaction. That is the process in which catalyst is used to increase the rate of the reaction is called as catalysis. That is the definition of catalysis. तो कैटालाइसिस को दो टाइप्स में डिवाइड, दैट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. Catalysis is of two types based on what? Catalysis is two types based on the physical state of the catalyst and reacting material. जो रिएक्टेंट्स बोलते हैं, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट दोनों के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कैटालाइसिस द प्रोसेस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. Catalysis is of two types based on what? Based on the physical state of reactants. ये याद रखना है, reactants and catalyst. Reactant and catalyst के दोनों के physical state के basis पे the process of catalysis is of how many types? Two types. Which are those types? First one is the homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis. And second one is what? Heterogeneous catalysis. This is the second type. What is homogeneous? Homo means same. Okay, what we are taking बेटा, अभी बोला मैं आपको रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों के फिजिकल स्टेट्स यहाँ पे अगर सेम है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल लिख रहा हूँ भाई, SO2 है,
दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2। फिर मैं इसको क्या करा भाई, ऑक्सीजन से मिला लिया O2। देखिए क्लियर से मेंशन करना है फिजिकल स्टेट, इट इज द गैस एंड इट इज आल्सो गैस। नाउ देन दिस इज द रिएक्शन takes place in the presence of the catalyst NO, nitric oxide, that is also gas. SO2 is converted to the SO3 in the presence of NO, that is you will get the 2SO3. So see that you have to write the physical state clearly. If the physical state of this, that is the reactant and catalyst, catalyst और reactant दोनों के physical states अगर same है, if the physical state of the reactant and catalyst is same, that is called as homogeneous catalysis. If the physical states are different, this is the first one. If the physical states of the reactants and catalysts are different, दोनों अलग अलग है, for example N2 ले लिया मैं, N2 plus 3H2, देखिए physical state clear से mention करिए, N2 is gas and H2 is also gas, and this is the reaction takes place. And here I am using this iron, iron को use कर रहे हैं भाई, N2 plus H2, what is this iron? This is the solid substance. If the physical states are different, that type of the catalysis is called as heterogeneous catalysis. If the physical state of reactants and catalyst is same, that type of the catalysis, that means both are in same phase, those are called as homogeneous catalysis. And the reactions are called as, these are the homogeneous catalysis reactions. I am giving one example to that. And second one, heterogeneous catalysis. If the physical states of the reactants and catalyst is different, such type of the catalysis is called as heterogeneous catalysis. So this is about the catalysis. Now then after that, what are emulsions? और एक क्वेश्चन है ये चैप्टर में, emulsions किसको बोलते हैं? What are emulsions? Emulsions, what are emulsions? Write the types बोल के बोलता, नहीं तो write it types बोल के बुला रहा हूँ. तो emulsions are the substances in which both the dispersion phase and dispersion media. It is the example for the colloidal solution. Colloidal solution है ये, colloidal particles है, ये जो colloidal particles है ना, ये भी liquids है, dispersion phase भी liquid है, dispersion phase is liquid and dispersion media जो ज्यादा quantity में है वो भी liquid है, liquid में liquid distribute हो रहा है. So such type of these colloidal solutions are called as emulsions. If finely divided liquid droplets, if the liquid droplets are present in the another liquid media, such type of the colloidal solution in which dispersion phase and dispersion media both are liquid, such type of the colloidal solutions are called as emulsions. For example, for the emulsion को एक example लिख रहा हूँ यहाँ, milk is the example, cold cream, grease, vanishing creams, all these are the examples for the emulsions. Next, once again I am repeating this definition. What are emulsions? Emulsions means colloidal solution in which dispersion phase is also liquid and dispersion media is also liquid. Such type of the colloidal solutions are called as emulsions. Emulsions are of two types. Emulsions are of two types. First one, oil in water type of emulsion, oil in water, water type of emulsions, oil in water type of emulsion. Second one, water in oil, water in oil type of emulsions. Oil in water type, oil in water clear है, oil तेल है भाई, ऑयल के ड्रॉपलेट्स है, किसमें है? वाटर में है. दैट मीन्स इन दिस फर्स्ट टाइप oil is the dispersion media and water is the oil is the dispersion phase and water is the dispersion media. Such type of the colloidal solution in which oil is dispersion phase and water is dispersion media, that is thus the type of the emulsion is called as oil in water type of emulsion. For that example is the milk is the example for that. And second one, water in oil type of the emulsion, water कम रहता, oil ज़्यादा रहता, तो water कम है, dispersion phase is water and dispersion media is oil. Such type of the colloidal solution. This is the example, cod liver oil है, cod liver oil है, और cold creams है, grease है,
All these are the examples for the water in aisle type of the emulsions. So this is about the emulsions. This is also 4 marks question. Water emulsions, write their types. In the surface chemistry, the next one is what is micelle. Micelle क्या है और क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप इसके बारे में है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. इससे ये सरफेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं. व्हाट इज माइसिल, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है. माइसिल, see that what is micelle. It is formed from the soap molecule. Soap molecule C17H45 COONA. ओके, इसको पानी में डाल दिए. C17H45 COO माइनस के जैसा हो जाता है. C17 मीन्स 17 कार्बन्स है. ये 17 कार्बन्स को ऐसा डाल लेना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17. यहाँ पे आप COO ग्रुप को डाल लेना. एनायनिक पार्ट पे लिख लेना. तो दिस इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट. इसको क्या बोल के बुलाते हैं? हाइड्रोकार्बन पार्ट दैट डज नॉट शोज द एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर. इसको टेल पार्ट भी बोलते. उसको लियोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट बोल के बुलाते. हाइड्रोफोबिक, वाटर से एफिनिटी नहीं है इसको. और एनायनिक पार्ट भी है इसके अंदर. ये मॉलिक्यूल के अंदर 2 पार्ट्स है. हाइड्रोकार्बन पार्ट है, टेल पार्ट बोलते. और उसको हाइड्रोफोबिक पार्ट क्योंकि वो पानी से एफिनिटी नहीं बताता. और दूसरा जो पार्ट है वो हेड पार्ट है. दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफिलिक पार्ट. हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर से इसको एफिनिटी रहता. यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 पार्ट्स है. हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स है. और ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट है. सो मॉलिक्यूल्स एक जगह अग्रीगेट होते, एसोसिएट होते. देखिए इस तरीके से अग्रीगेट हो रहे हैं वो. ऐसे अग्रीगेट मॉलिक्यूल्स, थोड़े बिग साइज के मॉलिक्यूल्स, अग्रीगेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते. सो दिस इज द अग्रीगेटेड मॉलिक्यूल is formed. Big size of the molecule is formed by joining the simple molecules which contains hydrophilic and hydrophobic parts. हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है. सो ये मॉलिक्यूल एक ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अग्रीगेट होके, एसोसिएट होके एक जगह एक बड़े साइज की पार्टिकल फॉर्म होती. इसको क्या बोल के बुलाते? माइसिल बोल के बुलाते. तो ये कब फॉर्म हो रहा? सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन के पास ही होता. soap molecule at certain concentration means detergent solution at certain concentration only gives the micelle. That concentration at which micelle is formed is called as critical micelle concentration बोल के बुलाते. And the temperature at which micelle is formed is called as Kraft temperature. This is about the formation of micelle. फिर इसके बाद में तो then cleansing action of soap. सोप का एक्शन कैसा है भैया? जब से समझाया मैं सोप माइसिल कैसा फॉर्म होता है इसके बारे में समझाया. देन एक्शन ऑफ द सोप कैसा काम कर रहा. देखिए बेटा, व्हेन अवर क्लॉथ्स आर केप्ट इन ए वाटर, फर्स्ट देखिए आप लोग अपने कपड़ों को अपन क्या कर रहे हैं, पानी में भिगा दे रहे हैं. कपड़ों पे जो भी इम्प्यूरिटी स्टेन्स वगैरह है इस पे यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं. दैट इज द स्टेन एंड ग्रीस दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लॉथ. अपने क्लॉथ के साथ में जो भी स्टेन ग्रीस है उसको अपन डर्ट बोल के बुलाते हैं जनरली. दैट इज द इम्प्यूरिटी. व्हेन दीज क्लॉथ्स आर केप्ट इन ए वाटर, पानी और ये ग्रीस के बीच में इंटरेक्शन शुरू होता और वो अनस्टेबल रहता. दैट इज इमल्शन फॉर्म होना शुरू होता. दैट इमल्शन इज अनस्टेबल वन, अनस्टेबल है. फिर इसके अंदर अपन डिटर्जेंट वगैरह डाल दिए तो क्या होने वाला है देखिए. दिस इज द डर्ट विच इज एसोसिएटेड विथ अवर क्लॉथ्स. डर्ट है. नेक्स्ट इसके अंदर डिटर्जेंट भी डाल दिए तो माइसिल फॉर्म्ड फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन इज एड्स ऑन दिस एमल्शन. ये डर्ट पे मिल जाता, ऐड हो जाता. और माइसिल का जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन से एफिनिटी बता के उसमें अंदर आ जाता और हेड पार्ट क्लॉथ के सरफेस के ऊपर रह जाता.
tail part is penetrate into the grease and head part is retains on the surface of the cloth. क्लॉथ के सरफेस पे रह जाता भाई एंड स्टेबलाइजेस दिस एमल्शन. इसकी वजह से ये ग्रीस और ये पूरा एमल्शन स्टेबलाइज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कैसा फॉर्म हो जाता. ड्यूरिंग द क्लिनजिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द रिंसिंग प्रोसेस 3 से 4 बार अपन पानी में बार बार इसको डालते गए तो ये टोटल एमल्शन जो है, ये टोटल टेल पार्ट, हेड पार्ट विद द ग्रीस इज एस्केप विद द वाटर. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट cloths become clean. This is about the cleaning action of soap. Once again I am repeating this. Dirt stains, which are, that means grease stain which is associated with our cloth, is called as dirt. Now then when our cloths are kept in the water, emulsion is formed between this water and grease. Now then that is unstable one. Now micelle formed by the soap or detergent solution is adds on this grease या emulsion पे मिलता हो. Tail part is penetrate into the grease and head part retains on the surface. As a result, total emulsion is stabilized. During the washing process, total emulsion is escaped from the water. As a result of this, our cloths become clean. This is about the cleaning action of soap. So these are the some important questions. important VSAQs है, एक दो VSAQs समझा रहा हूँ मैं आपको. इसके अंदर जो important VSAQs है, what are those VSAQs? First one, what is the Tyndall effect बोल के एक है, Brownian movement एक है. Tyndall effect किसको बोलते हैं? It is the property of the colloidal solution. It is the property of the colloidal solution. देखिए, what is the Tyndall effect? Tyndall effect. Tyndall effect is nothing but this is the property of the colloidal solution. इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, a light beam को पास कर रहा हूँ मैं, ऊपर से या साइड से भी पास कर सकते हैं. So whenever the light beam is passed on the surface of the colloidal solution, आहिस्ता 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 ये light beam की path narrow होते होते due to the scattering of light from the colloidal particles से लाइट स्कैटन होते 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 उसके बाद में वो नैरो कोन के जैसा एंड भी हो जाती. वी कैन एबल टू सी द पाथ ऑफ द लाइट इन द फॉर्म ऑफ द कोन. दिस इज द कोन इज कॉल्ड एज Tyndall cone and it is the this effect optical property of this colloidal solution is called as Tyndall effect. Once again I am repeating, when the light beam is fall on the colloidal solution due to the scattering of light from the colloidal particles, the light path is in the form of this narrow cone. ये जो पाथ है आहिस्ता नैरो होते होते एक कोन के जैसा इस तरीके से कंप्लीट हो जाती. दिस इज कॉल्ड एज द Tyndall cone and that effect is called as the Tyndall effect. So this is the 2 marks question. Now second one, what is the Brownian movement? Just like the gaseous molecules, this colloidal particles in the colloidal solution, ये colloidal solution है, colloidal particles zigzag movement exhibit कर रहे हैं. So this is the zigzag movement observed by the scientist Brown observe करे. ये movement की मतलब ये movement की property है, इसीलिए इसको kinetic property बोलते हैं. This is the kinetic property of the colloidal solution. Once again I am repeating this definition. Colloidal particles in the colloidal solution are moving randomly that exhibits the zigzag movement. It is observed by the scientist Brown. This zigzag movement of the colloidal particles in the colloidal solution is called as Brownian movement. This is about the Brownian movement. So these two are the important. And another one, what is dialysis? Dialysis किसको बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा इससे पहले एक बार. Now next, what is the dialysis? Very simple. Purification of the colloidal solution is called as the dialysis. Purification of the colloidal solution is called as dialysis. Purification of the colloidal solution. How this purification is done? Just you see that I am taking this. Okay, this is the container. In this continuous water flow is present. आने जाने का रास्ता रहता water का.
a bag which is made with the semi permeable membrane is taken. ओके, कोलाइडल बैग बोलते हैं इसको. ओके, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग को क्या करते हैं, वाटर में सस्पेंड करते हैं, इन विच कोलाइडल सॉल्यूशन which is going to be purified is taken. Now then, due to this continuous water flow, these particles, true solution particles, impure particles are washed away with the water, but the colloidal particles are retained in this bag. As a result of this, all the impurities are removed from this bag. All the true particles are removed from this bag. This is the process purification of the colloidal solution with the help of the membrane due to the continuous water flowing is called as the dialysis. इसको डायलिसिस बोलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करे तो इलेक्ट्रोड्स के पास ट्रू पार्टिकल्स जाते, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस बोल के बुलाते हैं. वट एवर इट मे बी, डायलिसिस मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द डायलिसिस. दिस इज द 2 मार्क्स क्वेश्चन. ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में इतना लिखना बस. नेक्स्ट और एक 2 मार्क्स क्वेश्चन है इसमें. फोर्थ वाला, व्हाट इज द गोल्ड नंबर. गोल्ड नंबर क्या है, व्हाट इज द गोल्ड नंबर, इसके बारे में. गोल्ड नंबर में मैं यहाँ देखिए मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, गोल्ड सॉल्यूशन ले रहा हूँ. गोल्ड सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन कितना ml लेना, 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन ले लिया. 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में मैं 1 ml NaCl मिला रहा हूँ भाई. ये परसेंटेज है वो जरूरत नहीं है, छोड़ दो. 1 ml NaCl whenever is added to this 10 ml gold solution, गोल्ड पार्टिकल्स NaCl के पार्टिकल्स से मिलके प्रेसिपिटेट हो जाते, नीचे आके जम जाते. उसको अग्लूटिनेशन और कोआगुलेशन बोल के भी बुलाते. वो भी एक डेफिनेशन है. व्हाट इज द अग्लूटिनेशन और कोआगुलेशन. colloidal particles are settled down in the bottom of the colloidal solution, that is called as agglutination or precipitation. यहाँ पे गोल्ड नंबर में क्या करना है, we are adding 1 ml NaCl to the 10 ml of gold solution. As a result of that, gold particles are precipitated. To prevent this precipitation, ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को रोक देने के लिए अपन थोड़ा लियोफिलिक, कौन सा भी लियोफिलिक को ऐड कर लेना. थोड़ा लियोफिलिक को ऐड कर लिया तो ये प्रेसिपिटेशन होना रुक जाता. हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस लियोफिलिक, यू हैव टू एक्सप्रेस इन मिलीग्राम्स. द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लियोफिलिक इज एडेड टू द 10 ml ऑफ द गोल्ड सॉल्यूशन in order to prevent the coagulation, precipitation by the addition of 1 ml of NaCl to it. 10 ml को 1 ml NaCl मिलाने से प्रेसिपिटेट होता. ये प्रेसिपिटेशन रोकने के वास्ते कितने ml लियोफिलिक को ऐड करना या कितने मिलीग्राम्स लियोफिलिक को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड एज द गोल्ड नंबर. सो दीज आर द सम important questions in the 4th chapter. Almost all I covered all these important questions. Okay, inshallah in next class I will continue with next chapter. Assalamu alaikum.